welcome back to the new video of this channel. So in this video we will be discussing about a problem which is minimum remove to make valid parenthesis. Leetcode 1249 problem. So let's see the problem is stated. So problem is saying that we have given a string of open bracket and close bracket and lowercase English letters. So our task is to remove the minimum number of parentheses. Parentheses like open bracket and close bracket in any position, so that the resulting parenthesis string is valid and return any valid string. So valid string is like if there are open bracket and close bracket, so the number of open bracket should be the number of close bracket, and it should start always with open bracket. It shouldn't start the close bracket. So this is the valid parenthesis conditions. So formally a parenthesis string is valid if and only if these are two conditions. It is a empty string, contains only lowercase letters, or it can be written as AB. A and B are concatenated to each other, and with where A and B are valid strings, or it can be written as open open on the close bracket, and inside the brackets there is a character, so it can be written as where a is a valid string. Okay, so let's see the problem statement. So problem is so example, sorry. So if we have given this example string this, then you can see this is the inside this character, this is a valid because there is a open bracket, and after this there is a close bracket, so it's a valid. And you can see this is all also valid, but this is not valid parenthesis, because, or we can say bracket, because corresponding to this there is no open bracket, there is only closing bracket. So this is not a valid parenthesis. To make the this valid parenthesis we have to remove this. So that's why after removing this our answer will be like this. So this will be our output. So let's see the approach for this problem. So before going to approach, you can see here there is no role of any character, because I have to see only the parenthesis like open bracket or close bracket. There is no role of character. So in approach part I will not see the characters because there is no role of this character. So we have given this, like we have given this string, inside this there can be a characters, but कोई characters का रोल नहीं है, इसलिए मैं characters को ले नहीं रहा, but directly characters को तो कंटिन्यू करते जाऊंगा. ठीक है, we have given this string. So you can see here there is a open bracket, again open bracket, again close bracket. अगर close bracket है, ये open bracket है, ये close bracket है, तो ये वाला एक valid बन जाएगा. ठीक है, इस पार्ट को हटा देंगे, इसको रिमूव कर दिया. ठीक है, there is again close bracket, so ये close bracket, ये open bracket, इस वाले पार्ट को भी हटा देंगे. After this there is a open bracket, sorry, close bracket. So this is the remaining part, there is no corresponding open bracket, so that's why we have to remove this. If we have given this example, so you can see these are making pair, open bracket closing bracket, these are making pair, but this is not making any pair, so that's why we have to remove this. In this example these two are making pairs, you can see the cursor, these two are making pairs, but this is not making any pair because there is open bracket corresponding to this, there is no closing bracket, so that's why we have to remove this. So after removing this our parenthesis will be valid, this parenthesis and this parenthesis. So approach part is very simple. What we will do is, if we have given this example, so we will take a step. Why we are taking a step? Because I have to at the same time I have to remove the pop or remove the character or bracket, because if I have an open bracket and corresponding to this I have a close bracket, so I have to remove if the close bracket is there and stack dot top is open bracket. Like if we see the approach for this example, what we'll do, we'll simply see like open bracket, we'll simply traverse this and we'll see like there is a open bracket है, तो उसको सिंपली स्टैक में पुश कर दिया. ठीक है, अगेन ओपन ब्रैकेट सिंपली स्टैक में पुश कर दिया. देयर इज अ क्लोज ब्रैकेट, सो क्लोज ब्रैकेट के केस में मेरे को क्या रुकना है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो मैं देखूंगा कि स्टैक का टॉप टॉप एलिमेंट जो है ओपन है या नहीं है. तो स्टैक का टॉप एलिमेंट देखूंगा कि ये वाला था स्टैक का टॉप अभी तक. ठीक है, तो ये ओपन ब्रैकेट है और यहाँ करस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टैक में से पॉप कर दूंगा. आफ्टर पॉपिंग my element will be only this much, one element will be there. So after this I'll traverse again and I'll see like there is a open bracket को पुश कर दूंगा. ठीक है,
then again we'll see like there is a close bracket, so मैं check करूंगा कि like step dot top is open or not, open bracket or not. Yeah, open bracket, so I will pop this. Then again I will see like there is a open bracket, so open bracket will be there. So these two open brackets are here. So what we will do is we'll we'll pushing the here we will be pushing the like characters in this stack. But what we will do, we'll push corresponding index, because why we are pushing a corresponding index. So you can see here we have two characters, 0 0. First character is at the 0th index, you can see here this character 0th index, and again this character is a 5th index, 0 1 2 3 4 5, 5th index पे ये पड़ा हुआ है, 0 index पे ये पड़ा हुआ है. Why we are pushing in indexes into the stack? Because after this I have to remove this these characters, जीरो जो जीरोथ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और जो 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उनको मेरे को हटाना भी पड़ेगा, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग मेरे पास बड़ी होगी, कोई कैरेक्टर्स भी होंगे उसमें, तो ये वाले कैरेक्टर्स को मेरे को हटाना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई वी आर पुशिंग indexes rather than the characters. So we can push the characters, but मेरे को फिर ट्रैक नहीं रहेगा कि कौन से इंडेक्स को मेरे को फाइनली रिमूव करना है स्ट्रिंग में से. दैट्स व्हाई वी आर पुशिंग द indexes here. So let's do the coding part. So coding part is very simple. We will create a stack of integer type. Why we are taking the integer type? Because we will push the indexes of corresponding brackets. So now we will traverse for int I equals to 0 to I less than s dot size, then I plus plus. Now I am traversing the string. Now I'll check like if s of I equals to open bracket. If s of I is equals to open bracket, so yeah, if if s of I equals to open bracket, so in this case what I will do is I will push index of corresponding uh, the character open bracket. So st dot push of I. अगर मेरे पास एस ऑफ आई इस ओपन ब्रैकेट है, सो इन दिस केस मैं उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है, उसका जो इंडेक्स है उसको इस तरह के पुश कर दूंगा. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस कि व्हाई वी आर पुशिंग द इंडेक्सेस रादर देन द characters, because I have to keep track of the indexes, because I have to remove that indexes from the string. So that's why we are pushing index rather than the characters. So in else if case किसको कंसीडर कर रहा है भैया? वी आर डूइंग else if because देयर कैन बी अ कैरेक्टर्स ऑल्सो. तो कैरेक्टर्स के साथ तो मेरे को खेलना ही नहीं है, ठीक है. मेरे को तो ओपन और क्लोज ब्रैकेट के साथ खेलना है. इफ एस ऑफ आई इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट. सो एक अगर मेरे पास एस ऑफ आई क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, इन दिस केस व्हाट आई विल डू, आई हैव टू पॉप द कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैक, बिकॉज इफ एस ऑफ आई इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, तो मेरे को चेक करना है कि स्टैक में जो टॉप वाला एलिमेंट है वो क्लोज ओपन ब्रैकेट है या नहीं है. सो उसके लिए अगर ओपन ब्रैकेट होगा तो उसको हटा दूंगा. आई हैव टोल्ड अबाउट दिस की अगर मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट कोई भी आता है, लाइक मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे आया था, तो मैंने स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ था, ओपन ब्रैकेट पड़ा हुआ था, उसको हटा दिया था. तो मेरे को इफ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, व्हाइल इफ नॉट ऑफ एस टी डॉट एम टी. अगर मेरे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड सेकंड कंडीशन इज जो एस टी डॉट टॉप, एस टी डॉट टॉप विल शो द इंडेक्स. एंड इफ आई राइट एस ऑफ एस टी डॉट टॉप, सॉरी, s of st dot top will be show the character. If s of st dot top equals to open bracket, see st dot top is the character वो index, because हमें stack में तो index store करा रहे हैं. So s of s, so st dot top is the index, and s of st dot top is the character corresponding to that index. So if this is the open bracket, so in this case what I will do, I'll simply pop the character from the stack st.top, st.pop. And if this condition doesn't meet, so in else case, what I will do, I'll simply push the index into my stack. So st.push of I. So this thing I have done. Now finally, after this loop, what I will do?
I will simply check like while जब तक मेरा stack empty नहीं होता, because after this I have these elements 0 and 5, so मेरे को erase करना पड़ेगा string में से 0 और 5 index को. So while not of st dot empty, जब तक के लिए मेरे पास stack empty नहीं होता तब तक के लिए मैं क्या करूँगा, उसमें से erase करते जाऊँगा. s dot erase, स्ट्रिंग में से इरेज करता जाऊंगा क्या, एस टी डॉट टॉप, जो कि टॉप इंडेक्स पड़ा हुआ है. जैसे यहाँ पे 0 5 पड़ा हुआ था ना, 0 5, सो 5 उठाया मैंने, फिफ्थ इंडेक्स उठाया और फिफ्थ इंडेक्स में से उसको इरेज कर दिया, तो उसकी लेंथ भी देनी पड़ेगी. एक एक एलिमेंट को, एक कैरेक्टर को मेरे को हटा देना है. एस टी डॉट टॉप, जैसे फिफ्थ इंडेक्स 5 पड़ा हुआ था तो फिफ्थ इंडेक्स पर एक एलिमेंट को मेरे को हटा देना है. और फाइनली एस टी डॉट पॉप भी कर लेना है, उस इंडेक्स को इस स्टैक में से भी हटा देना है. एंड फाइनली we will return our string. So this is the simple code, and if I run this code and see if this will work or not. Yeah, it is working perfect. You can see here. If I open this, let's submit this. Yeah, you can see here it is working perfect. So in this code, what I have done is I am simply storing my indexes of current corresponding open and close bracket. Why we are storing indexes? Because finally we have to remove those indexes, those the characters from corresponding those indexes. Like I have 0 and 5 in previous example. So I have to remove fifth index from the string and I have to remove zeroth index from the string. So that's why we are storing indexes rather than the character of open bracket or close bracket like this. So we are doing just you traversing the string and we are checking like if there is a open bracket, so you simply push the index of corresponding that open bracket, and there is a close bracket, so I have to remove the top element if this that top element of the top index of the index that is the top on the stack, the corresponding element of that particular index or character, the corresponding character of that particular stack index is close bracket or not. If there is a close bracket, सॉरी ओपन ब्रैकेट, सॉरी मेरे ये कंफ्यूज हो गया कि एल से पेज में क्या होगा कि अगर देर इज अ क्लोज ब्रैकेट इन स्ट्रिंग, देर इज अ क्लोज ब्रैकेट, तो मेरे को चेक करना है कि एच टी डॉट टॉप मेरे को इंडेक्स देगा, उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को कैरेक्टर निकाल लेना है. अगर वो ओपन ब्रैकेट है और मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो सिंपली पॉप कर दो, अदरवाइज सिंपली पुश कर दो इन स्टैक में, ठीक है. और फाइनली वी आर रिमूविंग द कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स. So and finally we are returning our answer. So this was the code. If you find this helpful, then please like, share, and subscribe.